What is the proposal as per the Charter Act 1853? Option A, local representation of Indians in the Governor General's Council. Option B, Lord Canning became the first Governor General of India. Option C, separation of executive from the judiciary. Option D, separation of the executive from the legislature. The correct answer here is separation of executive from the legislature. Okay. Next question. Which is a proposal as per the Government of India Act 1858? Local representation of Indians in Governor General's Council. Lord Canning became the first Governor General of India. India came under the British Crown. Extension of East India Company's rule. So, Government of India Act 1858 या just पूर्व revolt of 1857 है and which prompted the British government to acquire the affairs in India and abolish the East India Company. So East India Company एटू abolish होचे इंडिया रो जो पूरा पूरा प्रोविंस अच्छे या ऊपर सोवरेंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल जाऊे. सो इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज पास्ड. Next question. Which is a proposal as per the Indian Council Act 1861? Option 1, Raja of Banaras, Raja of Patiala, Sir Dinkar Rao were added as three non-official members in the council. Option 2, Lord William Bentinck became the first Governor General of India. Option 3, portfolio system started by Lord Wellington. Option D, extension of EIC rule to the provinces as well. So the correct answer here is Raja of Banaras, Raja of Patiala, Sir Dinkar Rao were added as three non-official members of the council. So by 1857 it was clear that because here revolt happened, so it was clear कि ना Indians को भी council रे मिसे बटा important अच्छे. Otherwise Britishers one sided है कि ना किसी भी करी पारे बनी. They cannot basically dominate India. They have to include India. So 1861 रे ए सिलसिला रे Indian Council Act रो series पास है which is 1861, 1892 and 1909 तीनटा Indian Council Act जो कि Indians को add करा जाए या ताको add करिबा पई किछि legislation आना जाए. So first of such kind was 1861 ଆଉ एथिरे legislative council रे. In the legislative council some Indians were basically nominated. Raja of Banaras, Raja of Patiala, Sir Dinkar Rao. Next question. In which act the Viceroy got the power to promulgate ordinances which could last 6 months? Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1935. This is a very important question. Your answer about option A, Indian Council Act 1861. Next question ko jiba. In which act separate electorate was introduced for the Muslims? Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Government of India Act 1909, Government of India Act 1935. The correct answer is Government of India Act 1909. याकू मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाए. Where Morley, Lord Morley is the SOS यानी कि Secretary of State and Lord Minto is the Viceroy. And since it is communal electorate रो कथाबार्ता first time आस्चे for the Muslims, so Lord Minto is called as father of communal electorate. Father of communal electorate. In which act separate electorate was extended further to Sikh, Christian, Anglo-Indians? Indian Council Act 1861, Government of India Act 1919, Government of India Act 1909, Government of India Act 1935. So the correct answer here will be Government of India Act 1919, also called as Montag-Chelmsford Reform. In which act separate electorate was extended to depressed classes, many scheduled workers, women and labourers? Government of India Act 1854, Government of India Act 1919, Government of India Act 1909, Government of India Act 1935. The correct answer is Government of India Act 1935. Next question.
Who was the first member in the Viceroy's Executive Council in 1909? सो जमती मु कहली कि इंडियंस को ब्रिटिश काउंसिल रे धीरे धीरे ऐड करागला माने इंडिया रे लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो बने ये सब ब्रिटिश मेंबर्स माने ही तांकर दबदबा थिला बट देन इंडियंस को भी एतरे धीरे धीरे ऐड करा जाय सो with regard to that तीनिटा इंडियन काउंसिल एक्ट पास है which is 1861, 1892 and 1909. Now these within these को तेरे वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे फर्स्ट इंडियन मेंबर को इंसर्ट करा जायतला. So this person was Satyendra Prasad Sinha as a law minister, as a law member. Okay, in the 1909 Act. Who was the first member in the Viceroy's Executive Council of India 1909? So it is the same question, Satyendra Prasad Sinha. Next question, who is known as the father of communal electorate? Father of communal electorate kaha ko kहा जाए? So I already answered this few minutes ago. This is Lord Minto. Next question, which act introduced diarchy at the provinces and bicameralism at the center? Bicameralism माने two houses. For example, Lok Sabha, Rajya Sabha, they are the two houses of the parliament. Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, या legislative assembly and legislative council, they are the two houses. So this is bicameralism. Diarchy माने division of subject. For example, reserved subject, transferred subject. So this is the diarchy. So which act introduced diarchy in the provinces and bicameralism at the center? The correct answer is Government of India Act 1919. Who gave the communal award? Dr. B.R. Ambedkar, Ramsay MacDonald, Dinkar Rao, Lord Minto. The correct answer is Ramsay MacDonald gave the communal award. So this happened during the second roundtable conference. Which was presided by Ramsay MacDonald, and in this conference Dr. B.R. Ambedkar issued the address of the depressed classes in India. He also formed the Depressed Classes Association. तांको द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक गोटे संस्था भी फॉर्म करा जायतला. या बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा was also formed by him. So लोअर कास्ट लोक या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट लोक मैंने थे डिप्रेस्ड क्लासेस थे तांको आउ गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट दवाई कम्युनल अवार्ड आसीथिला बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल because there was a ultimate agreement that is called as Pune Pact between Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar. Next question को जिबा, who recommended the open civil services? Ross Barker Commission, Aichison Commission, Dinkar Rao Commission, Ram Manohar Lohia Commission. So open civil services was recommended by Aichison Commission. So initially civil servants were appointed in India by the patronage of East India Company. So मैंने जहाँ को चाहूँते तांको अपॉइंट करते ले, and that too from a single college called as Haileybury. So this was a college in England. A college रे जो मैंने पढ़ते से तिनु ही ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते इन इंडिया. So then it was criticized and said कि ना open civil services होगा कथा. So it was recommended by Aichison Commission. Then our civil services which is there now, it is the result of Government of India 1935. So for the JPSC यानी कि Joint Public Service Commission या SPSC the State Public Service Commission या Central Public Service Commission. So this is an output of the Government of India Act 1935. So this is a very dedicated platform, Unacademy OPSC, Odisha Civil Services aspirants का पाई and other competitive examination पाई जो aspirants अच्छुंती हम ओडिशा रे. So Unacademy subscription नबा पाई अपन को first what is the advantage? अपन को Unacademy subscription ले ले advantage कौन छे? So daily you will get 30 plus hours of live sessions. So top educators के द्वारा live sessions रहबो जोटा अपन देखि पारिबे.
structured courses ରହିବ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। The top educators will be teaching you. New courses are published every week. प्रति हफ्ता new courses रहुଛି। तापरे कौनसी भी एग्जामिनेशन जब आपण दउचंदी ता पई लाइव टेस्ट रहइबो, क्विजेस रहइबो, मॉक टेस्ट सीरीज भी रहइबो ताकि प्रैक्टिस इफेक्टिवली आपण करि परिबे। कोको एग्जामिनेशन कवर होची अंडर अन अकेडमी ओपीएसए। सो फर्स्ट इज ओडिशा सिविल सर्विसेज या ओएस एग्जामिनेशन, तापरे एएसओ सेक्रेटेरिएट फॉर एंड द हाई कोर्ट एग्जामिनेशन, CTBED examination. So if you aspire to become a brilliant teacher in Odisha, ए सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करबा पई CTBED रो कोर्सेस, CPSC prelims if you want to be a police inspector, CPSC prelims रो भी कोर्स पर आपन को प्रिपरेशन करा जाउची OPSC अन अकेडमी प्लेटफॉर्म रे। देन OMC JC एग्जामिनेशन पाई अपार्ट फ्रॉम दैट आहुरी एग्जीक्यूटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन जेमती कि ओमास ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ए सबु पाई आपन को गाइडेंस मिलुची ओनली थ्रू वन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी OPSC। एंड ये सबु जक एग्जामिनेशन पे आपन को सेपरेटली सब्सक्रिप्शन नंबर दरकार नहीं, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन इज इनफ फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन नवा पई आपन को फी स्ट्रक्चर केमते रहबो। सो दिस गाइडेंस आपन को एति पई अछि बिकॉज सी द फी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लेस, जोटा कि अफोर्डेबल भी अछि एंड इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग एज कंपेयर टू द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बट प्रिपरेशन आपन को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म रो भी बेटर मिलुछि। सो 1 ईयर पई आपन को फीस रोची 7,000 रुपीस। आ फर्दर जदि आपन को प्रिपरेशन रे आहुरी कमिटेड रहबा को चाहंती, सो 2 इयर्स रो भी प्रिपरेशन आपन करि परबे हियर विथ 8,400 रुपीस। दिस फीस इज द रिफ्लेक्टिव फीस। ए फीस टा फर्दर डिडक्ट भी हे पारे बाय 10% एंड आपन को फीस इज 6,300 रुपीस फॉर 1 ईयर, 7,560 रुपीस फॉर 2 इयर्स इफ यू यूज माय रेफरल कोड याग्या लाइफ। सो 10% ऑफ हबा परे आपन को फीस एठी आपन देखि परछन, हियर इट इज रिफ्लेक्टेड एंड प्लस ए फी स्ट्रक्चर पई आपन को EMI ऑप्शंस भी रहउची which can be helpful for you। अपकमिंग बैचेस जहाँ जहाँ अच्छी OPSC अन अकेडमी रे आपन को मु सूचय दोची ताकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट यू कैन एनरोल इनटू दिस बैचेस एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम। द फर्स्ट बैच इज फॉर ओडिशा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एंड मेन्स एग्जामिनेशन बैच 14। ए कोर्स रो ना होची समीक्षा आ ये गोटे फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन माने बहुत ही बेसिक लेवल रो एतरे पढ़ा जाउचे, सब जक टॉप एजुकेटर्स एतरे आपन को पढ़ाउचंती। दिस इज द लिंक, ए लिंक टा डिस्क्रिप्शन रे भी रहइबो ताकि आपण ए कोर्स को जाई कि ना देखि पारेबे। सो समीक्षा बैच OCS प्रीलिम्स और मेंस पाई कंबाइंड बैच, सो इट इज एन इंटीग्रेटेड बैच। ASO एग्जामिनेशन जदि आपण नेक्स्ट ASO सेक्रेटेरिएट पाई नोटिफिकेशन आसीबा पे जाउची, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट ता पाई रोची समर्थ्या बैच। समर्थ्या बैच 24 डिसेंबर स्टार्ट होइछे एंड एथिरे भी आपनकर टॉप एजुकेटर्स अछंती जो माने आपन को एथिरे गाइड करिवे। Next up, Manthan batch. So Manthan is for the BED examination in science. A course टा 28 December start होची। Manthan batch रो भी course description रे दिया जाय छे। Similarly, Manthan for the arts. So complete course for BED examination जो माने arts department रे examination दोचंती। The course is starting from 28th of December। ଆଉ एठी आपन को जो educators पढ़ेबे आपन एठी देखि पारछंती से समस्तन को। सो फाइनली आज हमें कौन स्टार्ट करबा ना सिनोनिम्स और एंटोनिम स्टार्ट करबा। ए कोर्स टा जो रोचे इट इज इन वेरियस पार्ट, किछि पार्ट रे हमें कवर करछु। OPSC CPSC BED ASO OMC ए सब जक एग्जामिनेशन पे ये कोर्स टा बेनिफिशियल रहबो। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी ताहले मोर रेफरल कोड यूज करिवे याग्या लाइफ ताकि आपन को आहुरी 10% डिस्काउंट मिल पारिबो।